Prachi Sharma, will be your host for today. In a world that constantly presents us with new challenges and opportunities, the ability to tackle problems creatively and generate innovative ideas is more important than ever. Today, we have gathered here with a shared goal to enhance our problem-solving skills and unleash our creative potential. This workshop is specifically designed to empower you with practical tools and techniques that you can apply to various aspects of your professional as well as personal lives. And to guide you further on that thought, we have among us the renowned dignitaries, Mr. Abhishek Purohit, who is currently the Accelerator Head with Innovation Mission Punjab, and Madam Shagun from Innovation Mission Punjab. Mr. Purohit is a business graduate from FMS Rajasthan and a PGP Pro from UCLA Anderson. One of the most amazing highlights of Mr. Purohit's career has been that he is part of the startup ecosystem for over 6 years now. He has been instrumental in supporting startups by creating and executing high-intensity programs in various sectors and catalyzing funds. He is currently the Accelerator Head with Innovation Mission Punjab, working with early to revenue stage startups to build scalability and making them investment ready. He has worked with CIIA.co at IIM Ahmedabad, where he was directly engaged in creating a conducive environment for startups and fostering and de-risking entrepreneurships at national level and developing partnerships with philanthropic foundations, impact funds, government agencies, and multilateral organizations. In his previous stint, he was part of the large-scale events such as the Sark Sufi Festival and Jaipur Literature Festival. Furthermore, he has worked as a researcher for cultural partners of UNESCO to trace the historical lineage of Ibn Battuta and share these findings in published papers for UNESCO's archives. The project was awarded the Sheikh Zayed Award UAE 2019 for travel literature. Sir, we are truly honored to have you among us. Without further ado, I would like to please give a huge round of applause to welcome sir. Awesome. So, I didn't know it was a MBA, but just someone who works with startups. Can we quickly start? Like, this is a presentation. So, I'm going to bore you for the next 2.5 hours, presenting you the stuff that you don't want to read, and probably end up questioning कि मैं ये 2 घंटा क्यों waste किया. So, before that we do that. Quick show of hands. How many of you are willing to do a startup? Startup कौन करना चाहता है? Okay. तो बाकी लोग क्यों आए? अटेंडेंस मिल रही है? Family business में कुछ नया करना है. Okay. Existing business में कुछ नया करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? Innovation, so we'll talk about it later. But what is that individual called? Someone who's starting something new is called an entrepreneur, right? But someone who's existing in a business setup and doing something new there, what are they called? Yeah, someone said that. Entrepreneur. Yes, someone who's doing something, trying to do something new within a business setup or an established organization is an entrepreneur, right? Just wanted to get everybody on the same page, but जिसको entrepreneur भी नहीं बनना है, जिसको entrepreneur भी बनने की opportunity नहीं है, ऐसे कोई हैं? देख रहे हैं थोड़ा सा? You guys can see? Because I'm just going to speak next 2.5 hours. Yeah, ऐसा कोई है? Who wants to go out and get a job? कोई भी नहीं है. Surprised, yeah. This is the most concentrated entrepreneurial bunch that I have got. Nice, fantastic. Great. Most of the students are the ones who are going to have participation there in the open result. Fantastic. कल सब पहली बार कौन बेच रहा है कल?
पहली बार नहीं, सब कुछ ना कुछ एक बार पहले बेच चुके हैं. नाइस यार. तो सबके पास प्रोडक्ट्स हैं. आपके पास क्या प्रोडक्ट है? हैंडमेड थिंग्स स्केचेस वगैरह ड्राइंग्स में खुद बनाते हो. ओके. स्केचेस. Okay. So how many of you are either in food or making something out of art? A show of hands. Okay. Sir, आप क्या बेच रहे हैं? Sir, actually, I have a startup called Resume Guru. We provide resume writing and quality Services. Yeah. Nice. So I'm currently running a staffing and recruitment agency that specifically cater to internships. Wow. What are you doing? Sir, acting as a distributor for Ither. For? Ither, sir. Ither. Yes. Nice. I don't have startup. Okay, but you want to do a startup. Okay. Nice. So that's fantastic. I mean, I'm a little startled here because I have never got such a bunch of entrepreneurs shoved into one room के हाँ चलो कुछ करते हैं. Great. तो कैसी जा रही है जर्नी जो अभी तक चालू कर चुके हैं और anybody want to share? How is the journey going so far? How is the journey going so far? सर अभी कोई स्टार्टअप नहीं है. अच्छा जिसका है मैम आपका है. इट्स फैंटास्टिक. It's fantastic. मतलब वो तो ठीक है वो तो एग्जेक्टिव है. कर क्या रहे हो क्या रहा है? My startup is of jewelry and clothing. Okay. So it includes both the handmade and the reselling part. Okay. Reselling part as well. Nice. So, how many of you are into something apart from services which has to be retailed? Either your products or there are your products or food items. How many of you are into the retail sector? Or the products have to be retailed. एक स्टोर में जाकर बेचना होता है. आपका भी नहीं? कल जो कर रहे हो वो तो रिटेल ही है ना? First time. Or you're doing it for the first time? Okay. Should have raised your hand. Really like it if things are participative. Great. So I will just want to. So startup ecosystem, in my sense, there's a lot of jargons. बहुत सारे words हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शायद समझ में नहीं आती हैं. Oh, first of all, English and Hindi, and I can understand a bit of Punjabi. इसके अलावा if there's third language, I think someone else will help. So I hope everyone's comfortable with that. Second, we want to de-jargonize a bit of startup world. कि तो भी अभी आपसे कोई पूछते गया है आपकी कंपनी का पी रेशियो क्या है तो आप एटलीस्ट समझ पाओ कि पी रेशियो क्या होता है. Right? So what I want to understand from the crowd here is that retail, services and B2B. So retail में कितने हैं? Direct customer facing businesses. Oh, हाँ, but okay. And then how many into services but customer facing? Okay. And how many into businesses catering to different businesses? Okay, recruiting, but you're customer facing. आप internship के लिए तो लोगों से बात करते हैं. I'm थोड़ा उसमें confused हूँ. हाँ हाँ, okay. So any idea what are these called? B2B, B2C. What are these called? Business models. What are the constitutes? Can anybody tell me what are the constitutes of a business model? क्या क्या होता है business model में? किस-किसने business model canvas करा है? देखा है, करा है. हाँ, क्या क्या होते हैं? So basically under the business model we have key partners, fundings कहाँ से आ रही है, कहाँ से हमारे target market areas. You mean to say revenues कहाँ से आ रहे हैं? Revenues कहाँ से आ रहे हैं, the streams that we have regarding that, and the USP of the product जो है वो Differentiator. competitors के against भी है, and we have to mention that.
हमारे major competitors. So that's the part of your pitch deck. What is the thing which entails your business model? So business model is a model that works in isolation in some sense, apart from competitors. But any ideas, guesses? बिजनेस मॉडल में क्या क्या हो सकता है? सो B2C है, मतलब अगर तो बिजनेस है और कस्टमर तो है, उसके अलावा और क्या क्या है? प्रोडक्ट है, और क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स हैं, और क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग है, चलो Revenue model. है, और क्या है? लॉजिस्टिक्स फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड साइड, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट हो गया. बट रॉ मटेरियल्स, प्रोक्योरमेंट, cost structures, right? So I mean the presentation just briefly talks about a business model, but I would like to go in a little detail. That's why I'm just sensing what kind of people are here, how much are you aware, and all of that. Okay, so apart from that, so there's one thing which is the business model. The other thing is a financial model. Do we know about financial models? Okay, so I'll de-jargonize all of that a bit. Great. Well, welcome to How to Start a Startup. So, let's take your ideas a little ahead. So, I just want to sit in some basics. Startup ideas आते कहाँ से? So, for those of you who started, for those who you thought that internship के लिए probably need है, right? और you thought के resume बनाने की need है, और you thought के there's not enough access to good artisanal material, right? Or you thought that you maybe probably went out and thought के यार बढ़िया कपड़े कहीं नहीं मिल रहे, मेरा ही बढ़िया taste है और वही मिलना चाहिए सबको, right? So where do these ideas come from? Any at general? It starts from either a problem that you're facing or you're seeing that a lot of people are facing. Exactly. So ideally, startup idea comes from a problem. But if you're looking for problems, what is it that you need to have? You need to have some understanding of the domain. You need to understand that you need to lead the field. जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, कुछ इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए जो आपके शायद कल होंगे. Then it could be something in the emerging technologies also. AI का नाम किसने सुना है? Artificial इंसान. So a lot of people are working into AI. But what is AI in general? What is the difference between a smartphone and AI? Basic, extremely basic. If anyone can guess. AI is just like an advanced technology which can perform human operations and can actually have emotions and feelings. So what is that human operations? Like calculation without using a program, etc. Calculation तो मेरा calculator भी करता है. Like now we are actually the calculator we are using, they actually use the programs as programmed by a program. But an artificial intelligence will not use such programs, they will automatically by themselves. But on the basics of it, what is intelligence? ये बड़ी सी इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्मॉल क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट करना. For what? हाँ? इसलिए हमें चाहिए. अच्छा आप जब अपने हाँ स्मार्टफोन के अंदर हमें आगे कमांड्स देने होते हैं हाँ to work. But AI is trained to work by itself. ट्रेन करके भी आप कमांड ही दे दो. Sir, but training is used with a very heavy amount of data. Like for example, if we take ChatGPT or even Geeta.ai, there are many AIs. तो उनको proper heavy material से training किया जा रहा है. तो recurring training देते हैं. जैसे 2+2 4 होगा. फिर उससे हम पूछेंगे 2+2 कितना. अगर वो बोलेगा 5 नहीं, कहेंगे no it's 4. Then we again command it. Agreed. So what is this? What is this 2+2? This is information that we Is this information? put it into AI. Is this information?
Okay, digressing a bit, but I just want to. So this is. I'm just setting an example, and this is how I want to leave the entire next 2 hours. Intelligence is nothing but decision making. We humans make decision every day in and day out. आप उठ रहे हो, कॉलेज आना है नहीं जाना है, सेशन में जाना है नहीं जाना है, मैम सर को व्हाइट शर्ट पहनना है नहीं पहनना है, डिसीजन मेकिंग. आप जब अपने आईफोन पे टाइप करते हो तो वो सजेस्टिव टेक्स्ट देता है, दैट्स स्मार्ट. सजेस्टिवनेस इज स्मार्ट, डिसीजन इज इंटेलिजेंस. सिंपल है. अब इसको आप किसी भी डेफिनेशन में फिट कर लो. चैट जीपीटी, आप उस पर सर्च करते हो, आप उसको प्रॉम्प्ट देते हो, वो रिटर्न में आपको गूगल सर्च की तरह टैब नहीं देता है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, डिसाइड करता है कि ये सही इंफॉर्मेशन है और वो आपको डिसीजन सुनाता है. एज सिंपल एज दैट. सो इंटेलिजेंस इज डिसीजन, स्मार्ट इज सजेशन. दैट्स द बेसिक्स ऑफ इट. सो दिस इज हाउ आई वांट टू डेवलप इनटू हाउ वी कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ रनिंग अ स्टार्टअप, right? But before we do that, I have a certain framework that we need to do, which my colleagues and our intern she's interning with us and they will distribute to you. So आप अपना idea सोचो, जो भी आपका startup है, whatever it is and whatever you want to do, think of your customer. So your case, customer could be college going girl. I don't know what your target is. Can you take one and pass in the back? Your case, customer could be a 40-year-old woman, right? Your case is it could be someone who's just graduating from the college, or someone who's a professional for 10 years also, right? But you think of one person. So you think of one customer that you have and think of them in a situation or in a place. So for example, for him, if I have to do it, it will be a student who is about to graduate from a college and their place of being could be either college or home or hostel. You need to have to think of an environment where the customer exists, right? So is everybody clear or you have questions on that? Are we clear? I can't understand silence. So by environment do you mean the environment where we're going to be Where the conducting customer exists. like the environment related to the customer, like the place of sale. Not the place of sale. Right. Not the place of sale. So I'll take an example. I want to do a startup, right? And the problem that I'm trying to solve is आप लोगों ने कितने लोगों ने आप लोगों ने ट्रेन ली है चंडीगढ़ स्टेशन से, ठीक है, सबने वो ऑनलाइन टिकट कराया है सीटीसी से. आपको पता है प्लेटफॉर्म कब पता पड़ता है आपको? एक दिन पहले. कहाँ पता पड़ता है प्लेटफॉर्म? सिर्फ सुनना पड़ता है. प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कहाँ पता पड़ता है? कुछ ऐप्स देते हैं but they are wrong. They are wrong. Usually आपको स्टेशन पे जाके प्लेटफॉर्म पता पड़ता है. राइट? वहाँ पे वो उन्होंने स्क्रीन लगा रखे हैं, आप उसमें देखते हो कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, आप नंबर मैच करते हो. That is a piece of information that is delayed. और उससे कितने लोग एक दिन में इंडियन रेलवेज में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? एनी गेस? इंडियन रेलवेज मूव 10 लाख पीपल अ डे. रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड तो बहुत ही ज्यादा है. अब सोचो कितने लोग इस इंफॉर्मेशन के कारण भी ट्रेन मिस करते हैं. That's a problem to solve, right? Because that information is not available to people who are now used to getting information on their phones through internet. So for example, I want to solve that problem. मैं गया इंडियन रेलवेज के पास कि मैं कर सकता हूँ. उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हो. मैं कहा यस मैं करूँगा. उनका ठीक है ये लो करो आप. तो मैंने एक बना दी ऐप. उसमें मैंने कहा कि आप ट्रेन नंबर डालो
आपको 2 घंटे पहले प्लेटफॉर्म पता पड़ जाएगा ट्रेन का, ठीक है, ऐप बढ़िया है। अब मेरा कस्टमर है कोई जो ऑफिस से निकल रहा है, ट्रेन में जा रहा है, मैंने इमेजिन करा कि माय कस्टमर इज नाउ इन अ कैब इन दिल्ली ट्रैवलिंग फ्रॉम say Safdarjung to NDLS, New Delhi Railway Station. Now with this framework, what I want to do is I want to think of this person in an environment of a cab and probably going from office and a small baggage with them. And now I will do the framework. Similarly, I can also think of this person 2 days ago in their house in the evening thinking कि हाँ यार मेरे को 2 दिन बाद जाना है, मैं पैकिंग चालू कर देता हूँ, right? So that person is also there in the house. So now same person but different environment. So you need to identify the customer. You can choose any environment that you want to choose where your customer exists, right? And then let's do the framework. Now everybody is clear? Great. So can we do this now? Awesome. So for the same customer, activities में मैं क्या choose करूँगा? अगर मैं cab choose कर रहा हूँ, क्या कर रहा है वो? Probably he's sitting, he's fiddling on the phone, he's checking his hand carriage कि हाँ सब मैंने ले लिया है नहीं ले लिया है. Cab is moving, there is noise, right? These are some of the activities that are happening. What is the environment like? Environment is that there is traffic. He is little panicking कि यार time पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे. But I think his app is showing कि estimated time है, अच्छा पहुँच जाएंगे. और क्या हो सकता है? Cab का closed environment है, right? Probably it's clean, it's unclean, whatever. There's someone who's also sitting and driving him, right? Who's constantly on the phone and he's scared कि यार ये तो cab वाला बात ही करता रहता है. Interactions. What are the interactions happening? So this guy is probably telling him कि यार भैया आप जल्दी चल लो या देखो ट्रैफिक में से निकाल लो, और he is just talking random conversation, और ऊबर में कितना कमा लेते हो आप, right? Thinking कि मैं अपनी जॉब छोड़ के ही चालू कर दूँ, right? Then what are some of the objects? Maybe his bag is there, his phone is there. What are the other things that are there? Cab में एक safety equipment है जो बटन होता है प्रेस करने के लिए, right? What are the users, the perception that users have related to the situation or the interaction? So उनके दिमाग में मतलब जो आपका user है, what are they thinking and doing? So they now probably want to take the app out and see कि यार क्या कर रहे हैं, और probably want to see कि किस platform पे है ये, या is mapping on Uber कि यार कितना time बचा है, whatever, right? So this is how the framework goes. So if you can quickly in 2 minutes do this for your customer in the environment, that would be fantastic. Does anybody need a pen? Let me get some pens. Yes, ma'am. Can you go down? You can note it down on the phone. Yeah, you can use your phone. आप सॉल्व करो. फार्मर को एक छोटा ट्विलिंग इक्विपमेंट कैसे चाहिए? कुछ और सोचना है? पता नहीं है. आपका इंटरेस्ट बताओ. Fashion. How about selling Indian handmade garments into a Western outfit? Not a garment, but an outfit, but made of the Indian handmade garment. So probably chicken curry है, उसका एक Western shirt for office. Maybe that you're
Interesting. So now think of the customer. It could be male, female, whatever. Nice, you may choose. I guess सबका ही बाकी है. Who has finished? Where is the customer? Basically the customer. Who's the customer and where is he or she? Basically a customer who wants to decorate his home is in aromatherapy and self-care or as a college course. हमें दो customer को choose करें. Okay. Same. Okay. How many of you thought कि मेरे तो सारे ही customers हैं? Okay. Right. So there is a saying in the startup world or in the business world. अगर सारे ही customer हैं तो कोई customer नहीं. Right? The thing is, when you are solving a problem, you are solving for a certain set of people. Okay? But to say that, chalo, I'll give you a. So this framework was to make you ask the right questions, not to come to the answers. I will give you a situation. Let's see if you want to solve for it. Right? मेरे को सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, पर मैं 9:30 से पहले उठ नहीं पाता. मतलब स्टोरी ऑफ माय लाइफ, रात को 2 बजे या 3 बजे तक मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ, 8 बजे से अलार्म बजना चालू होता है जो कि 10 बजे तक बजता है, फिर मैं फाइनली उठता हूँ और मैं 11 बजे तक ऑफिस पहुँचता हूँ. शगुन नोट्स, आशना ऑल्सो नोट्स. फिर मैं 11 बजे तक ऑफिस पहुंचता हूँ और रोज बॉस की डांट खाता हूँ. कोई सॉल्व कर सकता है इसे प्लीज? सर बेसिकली एक अलार्म क्लॉक का ऐसे पार्ट है ऐप के थ्रू, बट सिंपल अलार्म नहीं, लाइक उसके अंदर का पर्टिकुलर टास्क थोड़ा क्रिएटिव बन सकते हैं. क्योंकि अलार्म तो काम नहीं कर रहा. नहीं, रात को पर्टिकुलर टास्क इसके अंदर सेव करो कि लाइक वॉशरूम में जाके मिरर की फोटो खींचनी, इन केस जब तक वो टास्क ना करो कंप्लीट तब तक वो अलार्म मिलेगा. तो वो काम ही नहीं कर रहा है. अलार्म तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ मैं. स्लीपिंग पिल तो और 12 बजे तक सोता रह जाऊंगा. हाँ? अच्छा, मदर उठा देंगी. Dancing bed. Get a dog. Get a dog. I have a dog. He also sleeps with me. मुझे ऐसा कर सकते हैं जो पहनने में काम आए और उसके साथ सो जाएं और फिर वो और फिर मतलब कुछ something vibration का I tried, didn't work. सर जैसे रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर दो कि लाइक समथिंग दैट इंसेंटिवाइजेस यू टू कर सकते. अच्छा, ये आपको ना मतलब कोई एक गेम सी बना तो फिर तो ठीक है. फिर तो जल्दी सोकर जॉब पे जाकर करना है. यही सैलरी आती जाएगी. यही नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी लाइक कुछ रिवॉर्ड देगा कौन? Also making an app for accountability partners. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, वो भी तो ऐप से उठाएंगे. और भी नहीं तो मैं सुन नहीं पा रहा. एलेक्सा पे अलार्म सेट कर दो. बहुत कोशिश कर ली यार. एलेक्सा, गूगल होम और एक वो तीसरा और था पेबल वाला, वो भी खरीद लिया है. बहुत फेम. You could not charge your phone in the evening so that the battery dies when you are about to sleep. So you could not. मतलब जो 8 बजे से 10 बजे अलार्म बजते हैं वो भी other alarm clock. The actual alarm clock. अभिषेक सारे सोच रहे हैं बहुत आलसी. Alarms are not working. Anything else? सिर्फ मुझे जो जल्दी आते सुबह 7 बजे वो बेल बजाएगा, फिर आपको उठना पड़ेगा. बेल ही तो सुनाई. मेरी बेल भी काम नहीं करती है. विल फाइंड अ बेटर कस्टमर. सर एक ऐसा रोबोट हो जो आपको हिलाए मतलब रोबोट. ओके. सर वो एक रोबोट देना चाहता है मेरे को. बॉस को बोलो सैलरी काट ले मेरे. बस इसी का वेट कर रहा था. सैलरी काट मतलब ठीक है. और कोई बेड पे शौक देना चाहता है मेरे को. सनराइज ही डायरेक्ट मतलब बारिश हो जाता हूँ मेरे को बालकनी में. बेड के नीचे वाइब्रेटर लगा दो. बहुत ही लगा दो. सीधा बेड से उठ के बाहर. ऑप्शन कर लो. फ्लेक्सिबल टाइमिंग.
हाँ यार ये ठीक है पर फिर उसमें मजा नहीं आएगा ना, ऐसे आप लोगों से इंटरेक्ट करने को नहीं मिलेगा. तो जस्ट वांट टू सम दिस अप. मतलब आप लोगों ने शॉक दे दिए, सैलरी कटवा दिया, सब हो गया है मेरे साथ. नहीं फिर अपने आप पहुंच जाओगे. हाँ सैलरी कटने के बाद कौन जाता है दोस्त. आप आओ कॉर्पोरेट लाइफ में, आपको पता पड़ेगा. सर मोटिवेशन खुद के बॉस बन जाओ, अपना स्टार्टअप शुरू करो. बस यही बचा था. तो कि जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी नहीं है. अपने आप नींद आएगी. Okay, I'll bring that up in some time. But all of you just wanted to solve it, right? लग गए solve करने. हम इंडियंस को क्या है, हमें बहुत ही ऐसा मजा आता है कि कोई चीज दे दो बस मैं आज तो solve करके ही रहूंगा. किसी ने सोचा कि प्रॉब्लम वर्थ भी है solve करने के लिए. कितने लोगों से exist? I thought about it, but then I also thought that if I actually want to do something and work on a startup, I need to figure out the problems also, so that this is one way I can recognize the problems of my startup. Of your startup? Yes, like if I'm working, if I'm not talking of problems of your startup. I am talking of the problem of the customer. Is it worth solving? Absolutely. Really? एक जना मांग रहा है एक solution. कितने पैसे कमा लोगे? A lot of customers are asking. We don't know that. Do we know that? There's just one person asking for a solution. Everybody jumped in. Is this worth your time? The 10 minutes that you gave, the brainwave that you gave. Is this really an entrepreneurial way to solve the problem? We need to understand, is the problem big enough to solve? Will there be enough customers who would be willing to pay for the solution? If I solve the problem of Delhi is choking right now, air pollution, is that a problem worth solving? yes. Right? Farmers are not able to get the right price of their yield. Is that a problem worth solving? Yes. Right? So ideally we need to look for problems, but I particularly did not mention there, we need to look a problem which is worth solving. And उसकी worth कहाँ से आती है? किसी भी problem, how is a problem worthy enough to be solved? कितने लोगों की problem actually? How many people it impact? Out of those people who it impacts, उसमें से कितने लोग मेरे actual customer बनेंगे? So this is what we did in this framework. When you start thinking about it structurally, you need to think, who is your customer? How are you solving them for them? And once you think how are you solving for them, then everything is aligned towards that. How are you reaching them? How is your marketing reaching them? How is your product reaching them? How is your product in the same price bracket जो वो pay कर पाएं? Everything is just becomes about the customer then. So that is why I wanted to do this framework. मेरे में say कि यार पहले customer identify करो, फिर उसके बाद हमें पता पड़ेगा कि हमें कहाँ effort डालना है, right? For example, if your customer is not college students, you should not be wasting time tomorrow, right? If your customers are probably 35-year-old office-going women, probably you should go do a mom and pop at some office to acquire those customers, right? So, who are our customers? And when you are an entrepreneur, you think you are the boss, but no. There is one more boss above you. That's the customer. Customer is your boss always. Right? So are we through on that now? That first is we need to solve a problem which is worth solving. Right? Or if there is a market gap. Like I tried to solve a problem of railways. We did the data about 2.5 something % people miss their trains because which in
a year's time is more than कितना था कुछ 1 crore people something like that. Now, solving a problem for 1 crore people is a big problem to solve, right? So we need to look for something which we can solve for a large number of people. I will reinstate it again, and it is worth solving. यार अगर मेरे को ऑफिस जाना में इतना ही प्रॉब्लम होता तो मैं अपने आप ही कर देता. I I'm just speaking loud about it. Probably I don't need a solution for it. Because अगर आप मेरे को solution लेकर आओगे कि हाँ ये 5,000 रुपए दो, ये रोज आपको आपके आकर बेड पे हिलाकर उठाकर जगाकर पानी का ग्लास देकर जाएगा. Will I be willing to pay 5,000 for it? Probably not. Right? I'm just screaming about the problem. Maybe it's not the real problem because I'm not willing to pay for it. People should be willing to pay. Only then the startup is gonna come into being. अगर कोई आपको pay ही नहीं करेगा, so it's charity, right? So next, ये किसको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? Your whatever product or service you're selling, it should be feasible first of all. कि आप उसे कमा पा रहे हैं, it is actually possible. It has a demand in the market. अच्छा. Yeah, and those two things. So I think that sums up the whole thing. Okay. चीजें तो 3 है यार, 2 things कैसे sum up करेंगी? This. Okay, I forgot about viability actually. So I'll tell you. But it's great that you're trying. Innovation sweet spot. Innovation और invention में क्या फर्क होता है? किसी ने साइंस पढ़ी थी 12th में? निकोला टेस्ला के बारे में पता है? Yes. पता है. हाँ, आप कुछ कह रहे हो? Innovation. क्या फर्क होता है? Invention is you create something new. Innovation is किसी existing चीज में you make changes. That's the myth that I want to break. That is exactly the myth I want to break. Sir, I guess invention is something जो guaranteed नहीं है कि वो आज काम आएगा, but innovation is something that you probably do to improve in the present. इन्वेंशन का अभी भी पता नहीं है कि कस्टमर बेस क्या है. इनोवेशन हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो कस्टमर्स Almost there. Almost there, but that's a very good attempt. निकोला टेस्ला के पास कितने पेटेंट्स थे? He is called the inventor of the century. He invented transmitting electricity without wires. मतलब उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंटर कहते हैं. बल्ब किसने बनाया था? बर्मर में रह गया. किसने बनाया था? He founded GE, General Electrics, right? He is called the innovator of the century. Why? What is the difference between the two? सर एक में Taking the, हाँ? हाँ? एक में कुछ भी नहीं था सामने कि किस चीज़ के ऊपर बनाना है. लाइक we use Nikola Tesla as example. उसने जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन बनाया, he had nothing. So वो एक इन्वेंशन था. But through the Bulb. जो बल्ब बना, उसके अंदर उसके सामने he had the idea of electric. It has nothing to do with the product. You need to take a cue from what she said. One was able to commercialize their invention, which is Edison. He commercialized the bulb. He found a customer, started a manufacturing, started selling it. Nikola Tesla, on the other hand, had hundreds of patents, couldn't find a single customer. So anything that you commercialize is innovation.
एनीथिंग यू मेक इन द आइसोलेशन, अभी वो हाइड्रोजन सेल पे काम चल रहा है, लोगों ने हाइड्रोजन सेल बना दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है, पर अभी कोई इसका कस्टमर नहीं है. दैट्स एन इन्वेंशन. सो एनीथिंग दैट यू मेड, आपने बना भी लिया है पर कभी बेचा नहीं, दैट्स एन इन्वेंशन. The moment you start commercializing it, becomes an innovation. That means people at large can use it now. That's the difference. Use case. People can use it. So whatever products, services that you're selling tomorrow, you are, in your own sense, innovating. Because whatever invention you created are now being used by a large number of people. इसके बारे में बात में आते हैं. बट इन्वेंशंस या इनोवेशन किस किस टाइप के होते हैं? जोमेटो है, क्या जोमेटो में इनोवेशन है? उबर में इनोवेशन क्या है? क्या इनोवेशन है? सर टैक्सीज तो पहले भी चलती थी, लेकिन जिस वे में उन्होंने एग्जीक्यूट करा है, कमर्शियलाइज करा है, वो पहले नहीं होता था. पहले एप्स नहीं होते. Uber example, right? Uber. Okay. So what is that called? It's called process innovation. Again, desorganizing. पहले क्या होता था? हम चौराहे पे जाते थे. I still remember when my dad used to take a flight or train. I used to go on my cycle. वो बगल में वहाँ पे जाता था, जो क्रॉसिंग है वहाँ से ऑटो वाले को लेकर आता था और कहता था प्लीज इन्हें लेके जाओ, कितने रुपए में, whatever. वो 100 रुपए कहता था, मैं नहीं negotiate करता था. And that's how it used to be done. Uber changed that. Uber changed the process of it. Now I don't have to go anywhere. I have to open my phone, press where I am, press where I want to go, see the fare and then call a cab. Change of process. Zomato, पहले हम खाना देने जाते थे, अब खाना मेरे पास आ रहा है. Change of process. These are process innovation, right? What is product innovation? कोई भी नया प्रोडक्ट, सैमसंग का फोल्ड फोन देखा, right? What is it? Foldable screen. It's a product innovation. Right? अभी वो जोमेटो नहीं, किसने मोटरोला निकाला है ना? रिस्ट फ्लेक्सिबल, रिस्ट वॉच टाइप फोन है, right? So those are product innovations. एक दुनिया में उसके अलावा और भी इनोवेशन है. Either आप कुछ नया प्रोसेस ला रहे हो या आप कुछ नया प्रोडक्ट ला रहे हो. सिंपल, ठीक है? ला किसके लिए रहे हो? कस्टमर्स के लिए ला रहे हो. कस्टमर कौन है? एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल जो उस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं. दैट्स अबाउट इट, राइट? सो इफ वी टॉक ऑफ इनोवेशन, व्हाट क्वांटिफाइज एज एन इनोवेशन? मार्केट शुड डिजायर इट. जो आपके कस्टमर्स हैं, दे शुड डिजायर दैट सॉल्यूशन. मैं सॉल्यूशन बोल तो रहा था पर मैं शायद डिजायर नहीं कर रहा. वायबिलिटी मतलब पैसे बनने चाहिए. अगर आपका गारमेंट 200 रुपए में बन रहा है और आप 150 में ही बेच पा रहे हो, तो वो वायबल नहीं है. सिंपल है. फीजेबल, कोई वो मेरे बेड में बॉम्ब लगाना चाह रहा था, तो फीजेबल नहीं है क्योंकि मेरे हाथ पांव चाहिए मेरे को, राइट? सो दैट इज नॉट फीजेबल. सो एनीथिंग व्हिच इज डिजायरेबल, which is viable, customers are willing to pay more than its cost, and it's technologically feasible, then you have a certain new innovation. Uber का example लेते हैं. Desirable है, लोग कैब बुलाते हैं. Uber के लिए feasible है, वो 30% रखता है, 70% कैब वाले को देता है, और उसमें उसका और उतना ही पैसा कस्टमर देने के लिए रेडी है. फीजेबल है, इंटरनेट सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, उबर ऐप उसने बना दिया है, एक्सेस दे दिया, राइट? सो वी हैव अ प्रोसेस इनोवेशन.
there. So now, when you go back today, think of what innovation you are doing in your startup, and that eventually will become the differentiator. Market में जब आप लोग कल जाओगे, I'm sure पहले भी sales कर चुके हो. What is the आप और आपके बगल वाले में क्या फर्क है? अगर आपके पास भी सेम क्लोथ्स हैं, बगल वाले के पास भी सेम है, क्या फर्क है? हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो, but can you create a process around it which is different, right? So there are a lot of innovations happening in the fashion industry. There's VR coming in. आप अपना 3 ऐसे फोटो लो, ऐप में डालो, ऐप बता देता है कि वो ड्रेस आप पे कैसी लगेगी, and then you can order it, right? So can we think on those terms? आप जैसे, how are you acquiring customers? There could be a new way of acquiring customers. अभी तो आप कॉलेज में हो तो आपके फ्रेंड्स हैं, there is some circle. Online marketing करते हैं. Online marketing करते हो. So online marketing again is a now a run in a mill kind of thing. आज के टाइम पे कोई Flipkart चालू करे, so is that a startup? No, because that process innovation happened. So that online strategy of acquiring customers has happened. How will you do it differently now? Is there something like that is already working, like you know? It's working. That's fantastic. Yeah. I'm not denying that. Mm-hmm. But to grow beyond a certain point, Right. you would need to start thinking differently on that front. Right? So what will be that different? That you need to understand. अभी आपका customer acquisition cost इतना high होगा, probably आप competitive pricing नहीं दे पाओगे. Sir, अभी तो like we are doing it organically, so it's हाँ, so अभी organic में जब सब में खत्म हो जाएगा फिर, yeah, because social media algorithms also work in a certain pattern. They want you to pay. Otherwise, Zuckerberg के पास वो नई Ferrari कैसे मिलती? Right? So, हाँ, so this basically is the general idea of what is the innovation. Now, how many of you are bored? Okay, that's good to see. I will not ask the question again. चलो अब, so I am now taking you on a journey. हमने innovation सोच लिया, हमने कहा जी ये हम करेंगे, full proof है, plan है, must. स्टार्टअप की जर्नी क्या होती है? आई एम श्योर आप लोग कुछ इसमें ऑलरेडी कर चुके हो, पायलट कर चुके हो. But what is the journey of a startup? How does a startup come into being? So the moment we think that hey, this is the problem I want to solve and this is the solution that I want, how do you validate a solution? Right? ये तो अभी हमने सोचा है, क्योंकि मैडम ने सोच लिया कि उनको उनके पास स्किल है and now she can sell it. But how does she know that at what price she can sell? Who is the ideal customer? Where will they buy it? Right? All of these are hypotheses. We work on certain hypotheses कि यार ये करके दे, ये मैं सोच रहा हूँ और मेरा कस्टमर शायद ऐसे एग्जिस्ट करता है. So what do? We go talk to a certain set of people and see कि हमसे कौन ज़्यादा relate कर रहे हैं. Who are our customers actually? And we talk to them, we do an interview. We do visual mock-ups. So I'll tell you a very interesting story on a visual mock-up. We were sitting at Ahmedabad and there was this startup. तो grains जो होते हैं ना अपने wheats and rice and all there, उनकी क्या है, क्वालिटी चेक करने के लिए आपको एक सैंपल जो है लैब में भेजना पड़ता है. अब इशू क्या आता है कि जो फार्मर है वो तो अपना लेकर आ जाता है ट्रैक्टर में डाल के, और वहाँ पे मंडी में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो इस क्वालिटी का है, मैं तो इतने पैसे दूंगा. फार्मर क्या कहता है, यार ठीक है भाई, can't do anything. So there was an entrepreneur. He wanted to create a machine which would take the sample then and there and advise on the quality. He is quality. But it was supposed to be handled.
So I was meeting, he was there, we were talking and हम दोनों सोच रहे थे कि यार हम दो मतलब और भी लोग थे बट कैसे होगा क्या होगा, how exactly would it like be. Straight away I went to different room, बगल वाले मीटिंग रूम में गया, वहाँ से मार्कर और डस्टर और लेकर आया, टेप लगाई, एकदम हैंड जैसा गन जैसा बनाया उसने, बोला ये तो डस्टर है, यहाँ पे 2 मार्कर रखे, आगे एक चीज़ और लगाई, रबर इधर टाइप. Well, this is how exactly it's gonna be. And the actual product was almost like that. मतलब we actually did a photo shoot of जो prototype बनाया था और जो actual product बनाया 99% सेम. कुछ नहीं करता, वो एक हेड टाइप गन है, उसमें आगे लगा हुआ है स्पैचुला टाइप, आप उसको डालो, ग्रेन उठाओ, वो अपने आप ग्रेन की एनालिसिस कर लेता है. आपको एक यहाँ पे एक स्क्रीन है छोटा सा, उसको प्रिंट कमांड दो, अदर एक छोटा वो स्क्रोल प्रिंटर होता है ना, वो है, उस पे कनेक्ट होकर पूरी रिपोर्ट आ जाती है. एंड नाउ पीपल कैन सेल एंड compete कि नहीं यार ये तो इस क्वालिटी का है, मेरे को ये प्राइस चाहिए. So that's how visual mockup sell. I'll give you also another example of a visual mockup. Instant coffee पिए? आपके यहाँ पे नेस्कैफे का स्टॉल है ना, वो मशीन में डाल के देते हैं. वो मशीन किसने बनाई है? नेस्कैफे ने नहीं बनाई, नेस्कैफे ने वो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम कर दी. There was this guy in California in the 70s. He said कि यार मेरे को जो है मशीन बनानी है, ये मैं बना सकता हूँ. इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर ने कहा भाग यहाँ से, कोई नहीं लेगा तुम्हारी मशीन, उन्हें मार्केट ही नहीं है. बोले लोग फ्रेशली ब्रू कॉफी पीना चाहते हैं, तुम्हारी मशीन वाली कॉफी कौन पिएगा? मैंने कहा यार ये तो गलत बात है. बोले प्रूव करो. उसने कहा ठीक है. बोले प्रूव करने के लिए मशीन बनानी पड़ेगी, इसके लिए पैसे चाहिए. उसने बोला भाग गया ऐसे, कुछ नहीं मिल रहा पैसे. तो उसने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा. तो उसने उसका रेफ्रिजरेटर का एक वो कार्टन आया हुआ था, उस टाइम रेफ्रिजरेटर काफी बड़े बड़े आए थे, डबल डोर वगैरह सब चालू हुए थे. बड़ा सा कार्टन लिया, बीच में जाकर एसएफओ डाउनटाउन में उसने लगा दिया वहाँ पे, जो कि वहाँ का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट था. उसमें 2 होल कर दिए और कॉफी बनाकर अंदर लाकर खुद बैठ गया. ठीक है, ऊपर लिख दिया कॉफी वेंडिंग मशीन. लोग $1 का नोट डालते थे, इस कोने से एक हाथ आता था, वो देता था इधर कप में, इधर डालता था कॉफी और उधर से देता था. ठीक है, that's what he did for 3 days and he made some money out of it. And then he went back to the investor and said कि देखो यार लोग तो खरीद रहे, मैंने 3 दिन में इतने $1 का धंधा कर दिया. like fantastic, चलो लो पैसे बनाते हैं. लिए पैसे, बनाया और उसके बाद बोला कि यार अब तो कोई बेच ही नहीं रहा है, अब तो कोई मतलब कॉफी नहीं खरीद रहा है, क्योंकि उसको फिर वो नाइसली मशीन, फिर उसने ये सारी कंपनीज के साथ टाई अप करा, नेस्कैफे ब्रू सबको टेक्नोलॉजी बेची, रॉयल्टी कमाई, मस्त मजे में जी रहा. That's a visual mock-up. Like this guy had nothing, made a machine and earned a lot of royalties out of it. It's a case study in Harvard. कि उसने कैसे visual mock-up करा, right? Alpha prototyping is something that we do with real customers. So this was lying between alpha prototyping and visual mock-up, wherein आपके पास actual में machine है और आप customers के पास जा रहे हो और आप उन्हें मतलब जो internal customers हैं basically, not the ones who pay you money, but friends, family, मैं भी आप ये जाकर आपको सबको sample देता हूँ. That's more like it. And then उसके बाद आता है बीटा, wherein we actually go to the customer and tell them कि यार ये फ्री का सैंपल है, जो परफ्यूम के फ्री के सैंपल्स आते हैं, इस पे लिखा हुआ होता है not for sale, right? तो वो कस्टमर्स को देते हैं and that's how they do the prototyping and see कि यार डिमांड आ रही है. So that's how you validate an idea. Okay? आपको लग रहा है बहुत सारा काम कर लिया हमने, हमारा आइडिया सोच, हमने प्रॉब्लम सोच लिया है, हमने सॉल्यूशन सोच लिया है, हमने आइडिया वैलिडेट कर दिया है, वाओ स्टार्टअप चालू करते हैं, राइट?
आइडिया वैलिडेट करने के बाद हम बिजनेस मॉडल वैलिडेट करते हैं. So that's a different story now. अभी तक हम क्या काम कर रहे थे कि हाउ द आइडिया कम्स इनटू द रूम. अभी स्टार्टअप नहीं है. अभी कॉफी मशीन की you will get all these slides, don't worry. We will send it to you. So अभी हमने आइडिया सोचा है और ये पता करा है कि वो आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, और हमें लगा अब वो आइडिया काम करेगा. अब उसके अराउंड हम पूरा बिजनेस मॉडल बनाते हैं. हमारे दैट्स वेयर द क्वेश्चन वाज कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हम प्रोक्योर किससे करेंगे, हमारा लॉजिस्टिक्स पार्टनर कौन होगा जो उसे लेकर आएगा, हम कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, कहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके बाद कौन सा ऐसा चैनल पार्टनर होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर जाएगा, फिर आगे रिटेलर तक लेके जाएगा, फिर कस्टमर वहाँ बाय करेगा. क्योंकि हमने कहीं मार्केटिंग कर रखी है, मैगी ने बोल रखा है कि 2 मिनट में बन जाएगी, ठीक है, तो फिर वो कस्टमर, आप लोगों ने कहा वाव बन जाएगी, तो उन्होंने आपने बाय कर ली मैगी, राइट. और फिर क्योंकि हॉस्टल में कौन कौन रहता है, राइट, वो तो अलाउ होता नहीं है हॉट प्लेट, तो हम वो बॉयलर में मैगी डाल लेते हैं, बना देते हैं, आपको 2 बजे खा लेते हैं, राइट. तो that's the entire business model of Maggi. Someone is producing something, they are getting it, manufacturing it, ensuring that it reaches out to you, marketing it so that you buy it, and then the money flows back. We'll talk about the financial model later. But if I have to simplify a business model, अगर मेरे को simplify करना है business model, तो मैं 2 चीजें कहूँगा. One is, how does the customer flows from within your organization, or how does the product flows from within your organization. Service industry sir, आपका business model क्या होगा? So business model basically as in customer acquisition वाला part? नहीं, not just that, but the entire business model. Right. So in service industry, you would have how the customer is flowing through the organization. पहले आपने उसे कैसे reach out करा, फिर उसे acquire करा, फिर उसकी need समझी, अगर customize है तो, फिर उसको वो solution दिया, ऐसे करके फिर वो उसने solution लिया, फिर probably अपना उसका LinkedIn page change किया, and then फिर उसने आपको पैसे दिए, more or less, right? How did the customer flow into your, what is the journey that they take? So, okay, so we put out content basically to once again basically provide value and generate an audience, and then people reach out to us ताकि organically आते हैं. Then we have the onboarding system. So from the customer point of view, customer ने पहले वो content देखा, फिर उसने आपको reach out करा, फिर उसने बताया कि ये मेरा problem है, right? फिर आपने उसका customized solution दिया. हम उनसे experience service पूछते हैं, then we accordingly उनको service structure बता देते हैं, and if they are into it, वो samples भी मांगते हैं, samples देते हो, yeah, and then उसके बाद we give them the payment options कि वो फिर pay कर देते हैं, and फिर उसके बाद आप service देते हो. चलो आप पैसे पहले दे दो, फिर आप service दे देते हो, फिर उनका काम हो जाता है. That's how the customer is flowing into your business model. Similarly, Maggi में कैसे product flow कर रहा है? कहीं किसी फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, बीट चाहिए, बीट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वो कोई और प्रोसेस कर रहा है, अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है, वो मेरा किसी सप्लायर से बात करके मेरे को तो आटा मैदा चाहिए, मैदा भी एक सर्टेन क्वालिटी कोई और प्रोसेस कर रहा है, फिर एक सर्टेन क्वालिटी मेरे पास आ रहा है, उसको मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और मैगी बना रहा हूँ, पैकेज कर रहा हूँ, रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा हूँ, रिटेलर को भेज रहा हूँ, साथ में मार्केटिंग कर रहा हूँ ताकि कस्टमर के पास आए. This entire thing. So whenever you go back and think about your own business model, 2 ही पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, और कोई भी तीसरा पर्सपेक्टिव का कोई भी ज्ञान दे तो बोलो यार, because it's super simple. Either how the customer is flowing from within your organization, or how the product is flowing from within your organization. Right? और इसको हर स्टेप पे वैलिडेट करते हैं.
सो अभी जैसे आप कंटेंट डाल रहे हो, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप देखते हो कितनी लीड जनरेट हुई है, तो आपने उसे वापस हाइपोथेसिस की ये काम करेगा, आपने देखा काम कर रहा है, चलो आप आगे बढ़ गए, आपने देखा काम नहीं कर रहा है, आपने चेंज कर दिया, नया टाइप का कंटेंट डालते हैं, राइट? That's what happens. Exactly. We keep on constantly validating our hypothesis until everything starts to work, right? आपने पहले कस्टमर को बाद में पेमेंट के लिए सोचा होगा, और कई ऐसे आए होंगे जो बिना दिए चले गए होंगे, नहीं सर गलती करी, नहीं गलती करी नहीं, आपने कहा कि नहीं पहले ही चाहिए, and started to work for you. It worked. Maybe you can take part payments. No. You don't have to. ठीक है, so but आगे अभी तो ऑर्गेनिकली आ रहा है, आगे जब मार्केट बढ़ेगा तब we कैसे are होगा? trying to once again figure out Google Ads and stuff. हाँ, so how the product or service is flowing within the organization. The second thing is a financial model. We don't cover financial model into this, but since you guys are doing startup, and so I just want to tell this to you. Whenever you are thinking of a financial model, think how is the money flowing within the organization. पैसा आपके पास कस्टमर से कब आ रहा है और आगे कहाँ कहाँ जा रहा है. मैगी के एग्जांपल में रिटेलर को देता है कस्टमर, उससे फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी के पास आता है, कंपनी फिर आगे पे करती है अपने सप्लायर्स को, वेंडर्स को, लॉजिस्टिक्स को, एंड दैट्स हाउ द फाइनेंशियल मॉडल वर्क्स, एंड इन बिटवीन दे मेक अ मार्जिन. सिमिलरली इनका भी क्या होता है, कस्टमर इन्हें पैसा देता है, फिर ये अपने सर्विस वाले को पे करते हैं कि भाई तू इनका सीवी बना बढ़िया कर, इनका चमका, और अपने मार्केटिंग वाले को पैसा देते हैं कि यार तुम और ऐड डाल ताकि और कस्टमर आए. सो एंड बीच में अपना एक थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं. सो दैट्स हाउ द मनी इज फ्लोइंग, दैट्स हाउ द फाइनेंशियल मॉडल वर्क्स. Key thing is that you should be able to keep a certain margin which is called profit. अगर वो मार्जिन नहीं बन रहा है तो फाइनेंशियल मॉडल वायबल नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ठीक करना पड़ेगा. अगर इन्हीं का एग्जांपल लेता, फॉर एग्जांपल इनका कस्टमर पहले नहीं पे कर रहा होता, बाद में पे कर रहा होता, तो 10 में से 8 ही पे करते, 2 तो बच जाते. ठीक है, और उसके बाद भी क्या होता, इन्हें सर्विस वाले को पहले पे करना होता, कस्टमर से बाद में आता, तो इन्हें अपना पैसा लगाना पड़ता, कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ जाता, और आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता. तो उन्होंने पहला पेमेंट लेकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करी. Might have, did you think about the cash flow problems or working capital problems? सर कैश फ्लो को यूजुअली सिंस द सर्विस बिजनेस, तो हमारे जो फ्रीलांसर्स है इनको एक उनको मंथली बेसिस पे है एंड पेमेंट मंथ इन एडवांस है, तो वी नेवर रियली रन इनटू दैट इशू. बट वो फिगर आउट अब होगा जब हम पेड एडवर्टाइजिंग करेंगे, तब मार्जिन प्रॉब्लम तब आएगी, बिकॉज देन हमें देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल 1000 रुपये प्रोडक्ट कितना ऐड में जा रहा है, मार्जिन फिगर आउट करने. That is a customer acquisition cost. Exactly. So but still अगर आप ये पेमेंट बाद में ले रहे होते तो आपको सैलरी तो पहले देनी पड़ती, क्योंकि वो तो काम बनते हैं. Exactly. Right. So these are certain ways in which we think of how the money will flow and how I will have some money in my pocket always. That's one. And second, how will I make profit out of this? These are two very important things. Financial model का objective भी होता है, हमेशा जेब में पैसा रहे, तभी तो मैं रिच फील करूंगा ना. चाहे मेरा नहीं है, आगे ही देना है, पर मेरी जेब में तो है अभी. पहला, और दूसरा इज कि मेरे को प्रॉफिट बने. ओके, व्हाई ऑल ऑफ द एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस सब फेल होते, कहीं ना कहीं तो फेल होता है. व्हाई डू मोस्ट बिजनेसेस फेल? एनी आइडिया? सर आजकल जैसे कोविड के बाद, कोविड के टाइम पे और उससे पहले ना फंडिंग बहुत इजीली मिल रही थी. अच्छा. तो जो एक्सपेंडिचर थे वो ग्रेटर हो रहा था, प्रॉफिट लेस हो रहा था, तो इसलिए काफी सारे स्टार्टअप्स फेल. तो आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्टार्टअप्स. चलो और डीमिस्टिफाई करो, स्टार्टअप और बिजनेस में क्या फर्क है? So business का primary motive is profit. हाँ, तो स्टार्टअप का प्राइमरी मोटिव इज प्रॉफिट. Not every time sir, I think majority क्योंकि जो आज के टाइम पे तो प्रॉफिट ही चाहिए, इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट ही चाहिए.
आज कोई नहीं कह रहा कि भाई ये ले पैसा और स्किल कर. Like obviously sir, जैसे like many of our the biggest startups in India, they are all loss making. They are loss making. That's because they started long back. Now people who are starting, there is no more unicorn. There people are looking for proficorns. That's a new word that people have done. So what is the difference between a startup and a business? Business is one that is like established. People are well known about it. But a startup is at initial stages that people are not very well knowing about it. And the person is actually capable enough to incur some expenditure and actually undertake some branding activities or something. So not just branding, but Emotional. kind of right. A startup is an aspiring business. Startup will one day eventually become a business. Flipkart, now profitable, is a business. At one point of time, so startup is a temporary organization that wants to become a business. तभी तो startup की definition क्या है? 10 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अपनी जो country में application. 10 साल से ज़्यादा पुराना है तो कई मतलब वो फिर startup नहीं है, वो कुछ और ही है. और अभी भी business नहीं बना है तो, right? So startup is something that is aspiring to be a business, and business is something which has established process, established brand presence, established market presence, established customers, supply chain, सब कुछ establish कर दिया है अब आपने, वो business बन गया है, right? So everyone is running out of profit, but coming back to the main question, why do these businesses जो कि established हैं, why do they fail? Kingfisher Airlines, established business. Jet Airways, established business, failed. Why? Proper market scanning नहीं करते. Sir, either the competitor drives them out or financial issues. I think these are the two major ones. What is the one primary one? Loans or debt. Loans तो लेते हैं, loans तो लेना चाहिए. As a, if you're running a business, you should take a loan. Somebody said something here. They don't change with time and change. Obsolete हो जाना is the second biggest cause. What is the first? Finance model. Someone is saying it right. Finance model is more or less right, but losses more than profit. it's not losses. Losses आप incur कर सकते हो. Tata Motors has been in losses for last 8 years. They burn too much cash in the beginning thinking कि customers आ जाएंगे, but it's not able to happen later on. Now, but share price तो अभी भी ऊपर जा रहा है. Right. No profit, right? No profit. They can pay for the losses. Losses is fine. अभी एक बैंक फेल हुआ था. Yes बैंक तो इंडिया नहीं, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली बैंक, SVB. इसकी काफी न्यूज आई थी स्टार्टअप कल्चर में. क्यों फेल हुआ था? क्या वो लॉस में था? उन्होंने अपना यूके का आम 1 पाउंड पे बेचा है. 1 पाउंड. Entire bank got sold for 1 pound. Why? They were profitable. They were making a lot of money. They did not have money in pocket. Equity. Equity नहीं. Cash in hand. Liquidity. Liquidity. Yes. Cash in hand was a problem. Where they invested the money, they were supposed to get returns 10 years from now. वो आता guaranteed है, अभी भी आएगा. पर हुआ क्या कि लोग भाग गए उनके पास कहने के हमारा पैसा अभी दो. And they did not have it. If they did not have the money, it was a bank run, and there was a problem. Similarly, how Tata acquired Jaguar and Land Rover. It was a problem of cash in bank. Not that Jaguar and Land Rover were not making profits at that point of time. But Jaguar and Land Rover, UK में you need to keep a pension fund. उनका pension fund डूब गया था. और वहाँ लोग retire हो रहे थे. Retire होने के बाद उनको pension देने के पैसे नहीं थे. जेब में. Profit तो था. टाटा ने क्या कहा कि यार मेरे मैं तो pension fund का king हूँ इंडिया में. I will give the pension fund, you give me the company. That's what happened. And that's how Tata acquired Jaguar and Land Rover. There's a data 65% of the companies fail because of cash flow issues, which is do not having cash in bank. मतलब जेब में पैसा नहीं और लेनदार सामने खड़ा है. That's the problem. Second thing is obsolete, which is competition driving you out or you become obsolete, like many companies have become
So लाइक आज के टाइम पे कोई डेस्कटॉप नहीं बेचता है more or less. तो it's an obsolete technology. जो बेचते हैं वो मार्केट से चले गए. तो डेस्कटॉप नीच हो गया काफी, लाइक इसको गेमर्स में. हाँ मतलब बट वो टाइप का मार्केट नहीं रहा ना. जैसे पहले टीवीएस कीबोर्ड बना रहा था अपना. So quickly how to build a prototype. These are some quick tools. ये हम आपको भेज देंगे प्रेजेंटेशन. बट किसी को अगर डिजिटल टूल्स बनाने हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, कुछ बनाना है, so these are some free resources that you can use. कुछ मॉडल्स वगैरह अगर किसी को बनाने हैं टेक में तो वो भी there are some places that are available. अपने यहाँ पे अटल लैब्स भी हैं, so you can take that. Next. चलो जल्दी करते हैं, people are getting bored. What is MVP? जो आप कल करने वाले हो, pilot. It's by an MVP. It's a minimum viable product, something that you can sell to the customer and take money for. That's a minimum. It might not be a actual final product that you want to do, but it's a subset of that. अगर गाड़ी बनानी है तो पहले स्केटबोर्ड बनाओ. इस पिक्चर में हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? What are we trying to solve in this picture? Trying to build a vehicle. Trying to build a vehicle? But what are we trying to solve? What is this solving? What is this solving and this is not solving? Feasible. Commute from point A to B. You can go also on a skateboard and in a car or on a bike, cycle or this two-wheeler. But you can't do that here. So problem supersedes everything. If you're solving for a problem, create something small enough that can solve the problem immediately. And then finally create a bigger product. Right? Next. These are ways in which how do you validate a business model. कल आप जब sales करोगे, what price should you be selling at? क्या आप सस्ता बेच रहे हो, महंगा बेच रहे हो? पंजाब में फुलकारी है, पता है, बिकती है. एक फुलकारी का आइटम सड़क के किनारे स्टॉल पे 500 रुपए में बिक जाता है, और वहीं आप गुड़ीरा के स्टोर पे जाते हो तो 30,000 का मिलता है. कारण? What is the difference? Is there a difference in the product? more or less तो नहीं है. Same technique है, थोड़ा कलर क्वालिटी थोड़ा बेटर होगा. But what is the difference? Brand value, presentation, okay. Visual merchandising. Huh? Visual merchandising. Visual merchandising, no, none of that. Customer is the problem. Customer is the difference. जो रोड साइड से खरीद रहा है वो कस्टमर और है, और जो गुड़ीरा पे जाकर खरीद रहा है वो कस्टमर और है. जो गुड़ीरा पे जा रहा है वो 30,000 दे सकता है, जो रोड साइड पे जा रहा है वो 500 दे सकता है. तो आपको कहाँ बेचना है? And never sell cheap. So always try and sell where you can get the maximum money for your product. But then that there's a problem of volume also. ये हो सकता है 30,000 वाले तो 2 ही बिके और 500 वाले ज़्यादा बिक जाएं. Then you have to think of economies of scale. ये क्या मैं 500 वाले ज़्यादा को बेच सकता हूँ, और 30,000 अगर 2 ही ले रहे हैं 60,000 होता है, पर मैं इधर 1000 कस्टमर को बेचूं और ज़्यादा पैसे कमाऊं, या फिर मैं उधर 2 बेचूं और कम पैसे कमाऊं. Then you have to think. But जब तक उस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो तब तक तो go for maximum. That's the only strategy that one should apply for. So आपके product, there is no real commercial value on cost of goods sold. Okay, it's skill that is being sold. You can sell it for M.F. Hussain की पेंटिंग जो कि 30 लाख में भी बिकती है, और मेरी पेंटिंग जो कोई 30 रुपए में निकली.
So that's what we need to understand, what is the right pricing. Then what is the unit? 500 रुपए में फुलकारी बेच के 400 रुपए लग रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं. 30,000 में बेच के 2,000 रुपए लग रहे हैं और मैं कमा रहा हूँ 28,000, तो ऑब्वियसली फिर वही बेचूंगा, राइट. कस्टमर एक्विजिशन, रोड साइड पे लोग अपने आप ही आ रहे हैं, तो डेरा में प्लेसमेंट की 5,000 रुपए कॉस्ट है प्रोबेबली. कस्टमर रिटेंशन, रोड साइड पे शायद लोग अपने आप ही आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया 500 मिल जाता है. वहाँ पे कस्टमर रिटेन करने के लिए हर महीने कॉस्ट देनी पड़ेगी ताकि नए कस्टमर आए या वही पुराना कस्टमर आए और कुछ और खरीद ले. So these are various aspects in which we validate our business model. जो मैंने बताया ना, we hypothesize something and then we try and understand how the market is reacting. एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूँ मैं. आप लोगों ने कोई भी SaaS का सेक्टर पता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट. SaaS के सेक्टर में प्राइसिंग, सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग कैसे डिफाइन की जाती है? It's defined by the number of lines of code. There is one code that you can sell for billions also, right? सर प्रॉब्लम कितनी बड़ी है जब सॉल्व कर रहे हो और उसके लिए पे कितना करने को रेडी है? Because like sir, जैसे some पे कितना करने को रेडी है is some way. Yeah, because some SaaS companies focus on businesses, they can pay a lot more. So Mailchimp किसको पता है? Mailchimp दो फाउंडर्स हैं, बढ़िया बंदे हैं, रात से काम करते हैं आज भी. $1 बिलियन नहीं, $10 बिलियन की कंपनी है, दोनों 5-5 बिलियन में. आज तक कभी इक्विटी नहीं बेची, ठीक है. आज भी वहीं गराज से वो 10 लोग ही काम कर रहे हैं, वो 8 पे एम्प्लॉय रख गए, 2 जने मस्त चिल करते हैं. वो जब प्राइसिंग कर रहे थे तो उन्होंने क्या करा कि यार ये मेरा ईमेल का सोल्यूशन है, अब ये पता नहीं लोग कितने पैसे देंगे. पहले कुछ सेंस में उन्होंने चालू करा सब्सक्रिप्शन. कहा यार ये तो बढ़िया है, लोग पैसे दे रहे हैं. 6 महीने बाद डबल कर दिया. बोले यार लोग अब भी पैसे दे रहे हैं और बढ़ता जा रहा है. फिर 6 महीने बाद फिर डबल कर दिया. तो लोग और पैसे दे रहे हैं और बढ़ता जा रहा है. वो तब तक प्राइस डबल करते गए जब तक उन्हें लगा कि हाँ यार अब जो है मेरा 2 कस्टमर छोड़ गया. That's how they decided on pricing. बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कुछ था ही नहीं ना, कोड बना दिया था, इतना ही रेप्लिकेट कर लो. प्राइस कैसे राइट प्राइस, अगर वो उसी सेल्स में बेचते जाते तो आज तक उसी में बेचते जाते. But no, they wanted to get to the right price in the market. They established mass milling pricing in market by doing that. हर 4-5 महीने में डबल करते जाते थे. वो लोग अभी भी दे रहे हैं, देखते कब तक देते जाते हैं. They tested the patience of their customers. So that's how they decided on pricing. That's how you create a hypothesis and then solve it. Canva also to understand SaaS. Canva कौन यूज करता है? Canva भी सही है, सेम है. प्रो जो भी पैसा देता है उसका वो they also decided on that. पढ़ाते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है. That's how you decide pricing. Okay. Next. Okay, this is seriously the last part. लेनी होगी. We will do this exercise for your customers. I will do one example. And I am doing it for Zomato. I sell food delivery service to my customer who is at home and they have a problem of not being able to go out or not willing to go out and want food at home. I solve this by helping them order their choice of food through an app and delivering that in the shortest amount of time. Works? My prof at UCLA told that अगर ये आप 35 words में fill कर सकते हो तो आप startup हो, वरना नहीं. Like your SaaS strict as that. आप दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस
चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मेरे को बोलो, आई विल फिट इनटू दिस. Every business in the entire world can be fit into this. So can you do this for your own startup? Let's hear it. I sell resume writing, LinkedIn file such services to a person who is a job seeker. B has a problem. Who is the core customer? Person who is a job seeker में 40 साल के अंकल भी हैं. Actually वही है, like because my gig worker भी है. तो क्या वो आ रहा है? जो लेबर है. professional job seeker है basically. Professional job seeker. Professional job seeker जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो तो उसको खुद को आता होगा. नहीं सर, actually वो भी आते हैं. वो भी आते हैं. और कौन है? Core as narrow as possible. So वही I think अगर एज लिमिट लेना है, okay, before एक और last example, you're launching Uber in Jaipur. It's one of my favorite examples also. So Uber के executives आए थे, at that point of time I was in Jaipur. बोला यार लॉन्च करना है. बोला ठीक है. तो वो बंदा आया यार एक दिन के लिए. एक दिन में कैसे Uber लॉन्च करेंगे? तो हो जाएगी. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होती है. ये came in with a flight morning में आया. बोला यार मेरे को चाहिए एक ऐसा लेना जो कि टेक कंपनी में काम करता हो, एज उसकी 31 to 33 हो, घर में एक गाड़ी हो, एक बच्चा, मैरिड है, वाइफ इज वर्किंग, ठीक है. He is traveling 15 kilometers and not more than 20 kilometers on daily basis, right? And there was a list of 35 parameters. पोजीशन मतलब टेक कंपनी में किस पोजीशन पे हो, किस टाइप की फील्ड में हो, फॉर्मल अटायर पहनता हो, लैपटॉप कैरी करता हो, मेल ही चाहिए. मतलब दैट वाज द प्रिसिजन एट व्हिच दे केम. मेरे को कितने गेस करो, मेरे को कितने फोन कॉल लगे होंगे ऐसे पर्सन को ढूंढने. 50 into 20 1300. Any guesses? Nine? One call. That's the beauty of precision. If I tell everyone, बाहर किसी को मैं बोलूं कि जाओ यार वो व्हाइट शर्ट में बैठे उनको ले आओ एसडी कॉलेज से, कितने व्हाइट शर्ट वालों को ले आएंगे वो. फिर मैं कहूँ व्हाइट शर्ट पर चश्मा भी पहनते हैं, फिर मैं कहूँ जीन्स भी पहन रखी है, फिर मैं नाम भी बता दूँ, तो इनके जैसे नाम के शायद 3 जने मिल जाए जिन्होंने. फिर मैं इनका नाम भी बता दूँ, नाम के बाद मैं सरनेम भी बता दूँ, फिर मैं रोल नंबर भी बता दूँ, फिर मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ बैठे मिलेंगे. तो जो ढूंढने आ रहा है उसको कितना टाइम लगेगा. एब्सेंट भी नहीं है, ये भी मैंने बता दिया कि एब्सेंट नहीं है आज. Right? It just took me one phone call. I called my friend who was working in a tech company. I told him that I'm looking for someone like this. Oh yeah, come, my boss is there. गए उनके पास, उनको बोला कि ये ऊपर से आएंगे, आपसे मिलना चाहते हैं. ठीक है, मिलो. बोला आप जैसे 4 लोग और चाहिए. उनका हाँ ठीक है, पगल वाली कंपनी खोल रहा है, मेरा दोस्त है, उसी में काम कर रहा है. तो बोला लिया exactly fitting to the profile. Right? And he was so sure के और क्या किया है, बोला सर ये कूपन लो, आपका 1 महीने का ट्रैवल जो है ऊपर से होगा. For 1 month they paid. ऊपर इंस्टॉल करो, ऐप डाउनलोड करो, कूपन लो, 1 महीने आप कभी भी कॉल कैब करो, ऑफिस आना जाना इज ऑन अस. For those 5 people. That's how Uber started. ये काम हुआ 2 बजे तक. गया शाम को 10 कैब वाले पकड़े, एग्जैक्टली पता था कौन सा कैब वाला चाहिए, नॉट टू हाई नॉट टू लो, विच काइंड ऑफ कार, ये वो. 10 को बोला, बोले ये 5 लोग ही आएंगे, यहीं से इंक्वायरी आएगी, इनको जो भी पैसा बनेगा वो हम देंगे. That's how Uber started. In that week he started 3 cities. Jaipur, Pune, Indore. Imagine the scale at which the Uber scaled across the globe. अगर आपके पास 52 वीक्स हैं और आपको 150 cities चालू करनी है, in the world, that's the scale.
So the idea is to be absolutely precise about your customer. So we'll go back to this again. Who is your precise customer? जिस पे आप सारे effort डालते हो? Sir, like once again, I think age is something we have already tried to, focus on. We usually, immediately when resume group, like the business, we started to focus on freshers. But we got more calls from people who are mid-level to senior level. हाँ, तो maybe mid-level is your customer. I am not denying कि junior ही होगा. Mid-level is your customer, but then you have to say that mid-level. Why? But once again, like, age is not something that we are able to, right now target. But once again, the person is a job seeker who's frustrated with their. How many years of experience? Average. Average is around 8 to 10. So that becomes 10 years of experience guy who's looking for a change. Is wanting to get his resume done. This is the person, and the problem is that Problem is that like they're constantly applying to jobs and are getting rejected, right? And we solve that problem by providing an optimized resume and improving the resume. Right. That's how you put it. Anybody else wants to try? Somebody else who wants to volunteer from the back, maybe you. Somebody else. Alum speaking. She's your alum, by the way. She was the 2016 batch, I think. Yeah. I sell recruitment services to early stage startups and tier 2, tier 3 businesses. Who has a problem of? Has a problem, and it is finding qualified talent, or they have a limited financials. Okay. And you solve this by? By helping them get connected to the right interns. Right. That's fantastic. What is it? Anybody else? Sir, I sell drug software, basically in silico drug discovery software to the pharmaceutical companies. And so the problem is that high amount of time and money. So you solve this by? By in silico study, by giving the potential leads, basically narrow timing the approach for the leads for. Fantastic. किसी और कंपनी के लिए ट्राई कर लो. उबर के लिए कोई ट्राई करना चाहता है? You want to try? Try. I sell Service. cab service. Yes. To To the people who travel a lot. travel a lot in planes, No. in trains, We used to travel daily. daily on cycle. You need to be precise. That's the thing. Travel from point to A to B in a car. They have a problem of what is the problem? Locating the cab and They have problem of limited access to cabs or transportation infrastructure. or they do not own any vehicle. Or they do not own anything. And you solve this by Providing cab service. providing an app through which they can book an app service. Uber app provide करता है cab नहीं. Right? Anybody else who wants to give it a shot on any business in the world? आप most difficult business भी ले आओ वो भी इसमें आ जाएगा. No? You want to try? No. You want to try for your startup? Yeah, I sell scented candles to 15 to 45-year-old customers. 15 to 45 is too big a range. Yeah, but we have different products for each shade. So let's do it for one product. For 35 to 45-year-old people who want to decorate homes and are into aromatherapy or go through stress and anxiety. And my product and services are aromatherapy by scented candles. No, you solve this by? Aromatherapy by scented candles. By selling these? By scented candles. By selling the? Yeah, they have different scents for different problems. Like anxiety has a different scent, and stress has a different scent. We solve that stress. By delivering those products? Yes. Okay. Nice. Right. Great. So, what is the business model? We briefly covered this, but financial model. अब इसमें आगे किसी को भी anybody who has a problem with their own startup, they can register with us, and then we'd love to get on a call with you and brainstorm with you कि यार कहाँ problem आ रही है कैसे हम help कर सकते हैं. But this is largely what we all help with. Let's quickly go to
Next slide. So I just want to summarize. Where do ideas come from? It has to be for a certain set of customers. We have to validate, and we have to create a product which can solve their problem. Right? Without commercialization, कुछ नहीं हो सकता. Yep. Key learnings अगर कुछ हुई हैं तो वो आपको पता ही है. नहीं हुई है तो भी ठीक है. Right? This is really important. Ideas do not get funded. Businesses do. So let's create a business. Next. ये अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं बता देता हूँ. It's a value proposition canvas. We can hand it out to you if you want to fill it for your own startup. Zomato के लिए बता देता हूँ. So this is what is the value that you are creating for your customer. जिस value के लिए वो पैसे देंगे आपको. कस्टमर का जॉब क्या है? उसे ऐप पे जाके अपना खाना मनपसंद खाना ऑर्डर करना है. उसके लिए गेन क्या है? उसे अपनी चॉइस का खाना मिले और गरम मिले. पेन क्या है? उसको भूख लग रही है और उसको बाहर नहीं जाना, या भूख नहीं भी लग रही है पर मंचिंग कर रही है. प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है? फूड डिलीवरी फ्रॉम द रेस्टोरेंट. गेम क्रिएटर क्या है? फूड ऑफ योर चॉइस एंड हॉट इन शॉर्टेस्ट टाइम. सॉरी, पेन रिलीवर इज द शॉर्टेस्ट टाइम. कम से कम समय में आपके घर पे गरम खाना. तो गेम क्रिएटर व्हाट एग्जैक्टली डज दैट मीन? गेन क्या होगा कि मेरे को गरम खाना मिले. गेन क्रिएटर क्या होगा कि वो उसकी चॉइस का और गरम खाना उसको प्रोवाइड कराया जाए. सो Zomato में it's always live ordering. Right? You can't pre-order in Zomato. That's because they want to give you warm and food of your choice. ये कस्टमर की साइड है, वो बिजनेस की साइड है. This customer, this is business, but this is how you generate the value. Business model canvas जिसने भी किया है या देखा है, वो इसका next step है. जब आप यहाँ से value derive करते हो तो business model canvas में यहाँ पे लिखते हो, and then you do the entire business model canvas on that. So anybody who needs these frameworks, then reach out to us. We have these and a lot of other frameworks as well. जो आप खुद अपने आप कर सकते हो. Happy Canvas है, Business Model Canvas है, Value Prop है, EIO है, various models, which is more like self-explanatory और आप खुद ही कर पाओगे. It's an iterative process. आप करते रहोगे तो आपका business और improve होता रहेगा. Right? These are some of the resources that you can go to and create a roadmap for yourself. That's it. I think this is the community if you want to join. This community has all the entrepreneurs from within the Tri-City. It's a WhatsApp group. अगर आपकी कोई problem है कुछ है तो maybe you can share it with the community there, and if anybody has a solution they can reach out. इसमें बहुत लोग आते हैं कि हमें हायर चाहिए, हायरिंग के लिए कोई चाहिए, या हमें वेबसाइट बनवानी है, या हमें कुछ ऐसा. lot of people put in queries. Okay, so that's us. Thank you so much. On behalf of the entire student council sitting here, we would like to express our heartfelt gratitude for this amazing experience. And truly, I believe it was an insightful session and we got to learn a lot. Right, guys? Yes.